Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the important news on the Hindu edition of 6th March 2023. Some of the news which we are going to focus is, first of all, we are going to focus on a very important Raisina Dialogue which is repeatedly in news. So something which is coming repeatedly in news that becomes important for our exam. So we will be definitely doing Raisina Dialogue. Along with that, we will be doing a framework adopted for protection of marine biodiversity in open oceans at the United Nations. So that is also a very important framework and related to environment. So that news will be very important. So again, we will be covering that today. Along with that, we will look at EPS. We have already done old pension scheme versus new pension scheme, the difference between that. Now today we will be doing about the employee provident fund scheme. There were certain amendments and the Supreme Court judgment. So what all are those changes? So we are going to see, and then we are going to see biocomputers today in our news. Along with that, we will also see some important news like one-liners which are important for the exam. So let's start. पहले पे से एक न्यूज ले लेते हैं. टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पिरेशंस. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दी police verifications which are pending in certain cases which is related to employment or granting of passport. So here the news article says that there is a new source of anxiety in Valley after the center ended the Jammu and Kashmir special status under Article 370 of the Constitution on August 5, 2019. So there has been problem in getting the passports, sometimes getting the promotions or appointments in Kashmir. So there are certain cases. For example, if you will see that related to passports, so several J&K politicians, which include former Chief Minister Mehbooba Mufti and her daughter Iltija Mufti, they were being denied passports and they have approached the court. Then there is a case of one doctor, Imran Hafiz, okay, who is an associate professor of interventional cardiology at Sher-e-Kashmir Institute of Medical Science, Srinagar. He was due to be promoted as additional professor last year, that is in December, but due to the pending police verifications, the promotion has not been happened till now. यहाँ पे देखिए जो कुछ important links हैं वो ये हैं कि डॉक्टर हफीज के जो फादर थे मौलवी मुश्ताक, who was gunned down by militants in 2004. Okay, so he is the uncle of Hurriyat chairman Mirwais Umar Farooq. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे that pending police verification has become a tool to deny some professionals government jobs and hundreds are denied passports for security reasons. Fine. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे that in Jammu and Kashmir 7.41% of the population are passport holders, and as of December 8, 2022, more than 10 lakh passports were issued in Jammu and Kashmir as against 9.58 crore issued overall in India. Now the next is regulators proposal on Rajasthan power line flouts Supreme Court orders threatens bustard. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे we are talking about the Great Indian Bustard. ठीक है, Great Indian Bustard which is endangered in India, is an endangered species and it is related with dryland ecosystem. Dryland ecosystem या आप कह सकते हैं grassland ecosystem. ठीक है, grassland ecosystem. तो यहाँ पे ये राजस्थान में जो पाए जाते हैं, ठीक है, Great Indian Bustard, they are endangered or they are at risk because of high tension electricity wires which are going through. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, they have proposed that only power lines below 33 kilowatt need to go underground and the rest be fitted with bird diverters. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको बचाने के लिए क्या होना चाहिए, अगर if you want to save this species which is critically endangered, that all the electric lines should be below the ground. So now what the Central Electricity Authority is proposing is that only those power lines which are below 33 kilowatt, they should go underground, rest of them should be fitted with bird diverters. Now see, the problem is जो majority of the power lines है राजस्थान के सोलार प्रोजेक्ट से, they have a rating above 33 kilowatt and several such proposed ones are expected to pass through the priority areas. Priority areas means those areas which is the habitat of Great Indian Bustard. Okay, the next is tax transitions. So here we are talking about goods and services tax. So goods and services tax के बारे में now see the nearly 1.5 lakh crore of gross goods and services tax collection has taken place in February 2023. Okay, so they mark the 12th, इनके importance देखिए क्या है, they mark the 12th successive month where GST revenues have crossed 1.4 lakh crore and the
fourth highest single monthly kitty since the launch of GST regime. So GST regime, it was launched from July 2017. Okay. Now the next is, there has been a certain shift which is important for us to understand. That shift is the composition of GST revenues. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट 10 मंथ है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो खत्म होने वाला है मार्च 31 को, उसका जो फर्स्ट 10 मंथ्स थे, वी सी दैट रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट वर राइजिंग by 29%, while domestic transaction and services import they yielded 22% uptick in taxes. Okay, but February का अगर आप देखेंगे marks the second time in 3 months that domestic revenues have outgrown taxes from good imports. इसका मतलब जो domestic transactions हैं या domestic transaction से जो tax आ रहा है that is greater than import. इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो there has been a sharp dip in imports in January, which is also signaling a cooling of discretionary domestic demand that has been driving up the import bill along this 10-month period. The next is attack on knowledge. So यहाँ पे we are talking about the Foreign Contribution Regulation Act FCRA, which is implemented by Ministry of Home Affairs. तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ही इसको रेगुलेट करती होगी, बट ऐसा नहीं है. It is Ministry of Home Affairs which implements the Foreign Contribution Regulation Act. Now recently the FCRA license of Center for Policy Research has been cancelled. Fine. So it was cancelled due to lapses in income tax paperwork, then lack of due process in accounting process, and diversion of funds to publication of books, which is not a part of CPR objectives according to the authorities who are implementing this act. अगर अब हम CPR की बात करें, so it has been working on improving governance and enhancing state capacity in collaboration with government, public and private sectors. Okay, there have been many advocacy and campaign groups that have been facing the wrath of government in the recent past. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि what is FCRA. So अगर हम देखेंगे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये इंश्योर करता है कि फॉरेन फंड्स जो इंडिया में आते हैं इट शुड नॉट बी यूज्ड टू अनड्यूली इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया. ओके, बट रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ related to non-governmental sector, okay, related to certain clauses which are mentioned in FCRA, the strict clauses, so it is weakening the non-governmental sector in India. Fine. अब अगर आप देखेंगे कि इंडिया के कुछ ऐसे विजन है जिसमें वाइब्रेंट नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस केस ऑफ CPR, so India's new education policy envisages academic exchange and cooperation between Indian and global institutions to raise the standard of higher education and research in the country. At the same time, India also wants to emerge as a center of technological excellence and manufacturing. Recently, हम जानते हैं कि 2 Australian universities have announced to set up their campus in GIFT City. But जो reactionary state actions चल रहे हैं, especially against CPR and other organizations, it does not go well with the India's vision. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे that restrictions on these NGOs and institutions for national security reasons are part of rule everywhere and are acceptable, but they are to be exercised sparingly. मतलब the author is suggesting कि इसको it should not be a norm, okay, it should be an exception. Fine. Now coming to Libya, which is a country in Africa. तो यहाँ पे लिबिया के पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जा रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लिबिया में मुअम्मर गद्दाफी को गए अब 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं स्पेशली. तो अगर आप देखेंगे कि दैट नाउ इट इज गवर्न बाय 2 पावर सेंटर्स. वन इज इन त्रिपोली, ओके, एंड द अनदर वन इफ यू विल सी इट इज इन टोब्रुक. ठीक है. अब त्रिपोली में जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसको GNA कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड. और टोब्रुक में क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. टोब्रुक में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. तो त्रिपोली में GNA, टोब्रुक में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है. तो अगर आप देखेंगे जो त्रिपोली है इट कंट्रोल्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड्स टाउन ऑफ त्रिपोली एंड मिस्राता. और उसके बाद जो टोब्रुक है, एंड वाइल द टोब्रुक इट कंट्रोल्स द ईस्ट एंड साउथ. फाइन. तो यहाँ पे अब क्या है कि 2
जगह से गवर्नमेंट चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उस कंट्री की क्या हालत होगी जहाँ पे 2 जगह से गवर्नमेंट चलाए जा रहे हैं और साथ में यहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये समझने की बात है कि इफ यू हैव 2 पावर सेंटर्स देन फॉरेन इंटरवेंशन स्पेशली द रीजनल कंट्रीज ऑफ दैट एरिया दे वुड ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। तो लीबिया का भी यहाँ पे यही कंडीशन है। ठीक है, so there has been various phenomena you can see that in February 2022 HOR जो कि कहाँ पे है, टोब्रुक में उसने डिक्लेयर किया that at the term of the incumbent Prime Minister Abdul Hamid Deiba heading a government of national unity was over and he appointed former Interior Minister Fatah Baksha in his place. But Mr. Deiba he refused to give up his position, forcing Mr. Baksha to function from the town of Sirte. Fine. Then there was a mounted military attack in Tripoli by Bashaga which was unsuccessful. Okay. Now उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो Libyan politicians हैं they have amassed extraordinary wealth while the economy fed by oil revenue is expected to grow by 18% this year. It means if you will see the growth of Libyan economy is quite good, 18%. But one third of Libyans they live below the poverty line. It means what? जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर अमेसिंग टू मच वेल्थ. ओके, सो दैट इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द करप्ट पॉलिटिशियंस दे अमेस द वेल्थ, दैट इज कॉल्ड एज क्लेप्टोक्रेसी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्लेप्टोक्रेसी. अगर हिंदी में मैं इस टर्म को अगर ट्रांसलेट करूं तो सिंपल है, चोरों का रूल. Fine. The UN Special Representative they have also described this situation as redistributive kleptocracy. उसके बाद अगर हम देखेंगे there has been foreign competitions. तो अगर आप देखेंगे कि there are major countries in that region. For example, if you will see Gulf Cooperation Council के जो members हैं कतार and UAE, ये दो अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे कि if you will see कि अगर हम कतार की बात करें, it is supported the Islamist government in Tripoli. और UAE backed by Egypt, it is supporting the HOR in Tobruk. Fine. तो यहाँ पे डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं. उसके बाद UAE है, it has backed the offensive with hundreds of drone strikes, weaponry and jet fuel and funded Sudani and Russian mercenary as part of its forces. उसके बाद आप देखेंगे that Turkey it has signed an agreement with Tripoli administration and provided it with drones, air defense system and mercenary from pro-Turkish militant groups in Syria. Fine. So these are the conditions which are happening in Tripoli. अब देखिए recent days में कुछ changes हो रही हैं, जैसे कि in a dramatic move the UAE has abandoned its earlier support for the Tobruk administration and has reached out to Mr. Deiba in Tripoli. Okay, and Mr. Deiba has not included Islamists in his government and has offered the UAE that contract it had obtained in the Gaddafi period in energy, construction and telecom. Okay. So these are the role of foreign countries in Libya. उसके बाद कतार जो है it quickly shifted away from Tripoli and had made overtures to Tobruk, establishing ties with Mr. Haftar and his sons. Then if you will see Qatar, it has shed its affiliation with political Islam and has built ties with UAE, Saudi Arabia and Egypt, but it retains an aggressive posture in the East Mediterranean. Russia with mercenaries from the Wagner group remains entrenched in Libya. Okay. Now, for Turkey, it views the oil-rich country as a valuable base to expand its influence in Africa. Now, coming to the higher pension scheme, that is Employees Pension Scheme of 1995. तो यहाँ पे इसको समझने के लिए we have to understand from here that 2014 में EPF का एक amendment आया which raised the pensionable salary cap to ₹15,000 per month फ्रॉम ₹6,500 पर मंथ. इसका मतलब EPF में किन का पेंशन अकाउंट हो सकता है जिनकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 15,000 हो. सो अर्लियर इट वाज 6,500, उससे पहले ये 5,000 था एंड बाद में ये 6,500 हुआ. बाद में 2014 में इट वाज रेज्ड टू 15,000 एंड देन इट अलाउड एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट 18.33% ऑफ द एम्प्लॉयज एक्चुअल पे इवन इफ इट एक्सीड्स द कैप. कि मतलब अगर 15,000 से ज़्यादा भी है किसी का सैलरी और वो EPF में अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है तो भी एम्प्लॉयर को 8.33% जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब देखिए एक स्कीम आई EPS का 1995 में. ओके,
सो यहाँ पे देखेंगे कि इस स्कीम में ये था कि दैट इवन दो एम्प्लॉयज हैड बीन मेकिंग पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ओवर एंड अबव द सीलिंग फॉर द एम्प्लॉयज ओनली 80.33% ऑफ द पेंशनेबल सैलरी कैप हैड गॉट ट्रांसफर टू द पेंशन फंड। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक। समझो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझो सैलरीबल कैप है 15,000, किसी की सैलरी है 20,000, तो जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 8.33% होगा 20,000 का, ठीक है। बट पेंशन फंड में जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी 8.33% ऑफ 15,000, नॉट 8.33% ऑफ 20,000, ठीक है। तो ये क्लेम करना ही जो है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का है कि यस, इफ एम्प्लॉयर्स हैव मेड दिस हायर कॉन्ट्रीब्यूशन नाउ दे कैन क्लेम इट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द अमेंडमेंट इज दैट अनलाइक इन द पास्ट व्हेन न्यू एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द प्रोविडेंट फंड कंपल्सरी बिकेम द मेंबर्स ऑफ द ईपीएस। पहले क्या था कि आपका सैलरी कितना भी होने दो, हो सकता है कि आपका सैलरी कैप से ज़्यादा हो, बट उसके बाद भी यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ ए प्रोविडेंट फंड ईपीएस, ओके, इफ यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन। बट द न्यू रूल सेट कि बस वही लोग बनेंगे प्रोविडेंट फंड के मेंबर्स जिनका वेज जो 15,000 से ज़्यादा नहीं है, फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है that those who retired, पहले क्या था कि those who retired before September 1, 2014 without exercising the option under paragraph 11(3) of the EPS rules would not be eligible to apply for higher pension, as this was what the court had laid down in its latest verdict, fine। तो यहाँ पे ये है कि अब ये प्रॉब्लम है, तो अब इसको किसने रिजॉल्व किया? सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 4, 2022 के जजमेंट ने, दैट इज ईपीएफओ वर्सेस सुनील कुमार बी केस। सो यहाँ पे क्या है कि इट हैज अपहेल्डेड द 2014 अमेंडमेंट ब्रॉट इन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, okay, and it has given an opportunity to all employees who did not exercise the option under paragraph 11(4) of the EPS rules for higher pension but were entitled to do so. Got it? So it has said that the time to exercise the option shall stand extended by further period of 4 months. जो ये higher claims नहीं कर पाए थे, अब दोबारा higher claims कर सकते हैं 4 महीने के अंदर, fine। Now what is the other important point? That the pensionable salary, which represents the average of the last 60 months of the salary, will have to be multiplied by the number of contributory years, the sum of which is to be divided by 70, which indicates the average longevity for an Indian. So this is how the pension will be calculated, fine। उसके बाद ईपीएफओ में क्या है कि अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 58 इयर्स इज डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम अ सर्विस एंड कॉन्सिक्वेंटली एग्जिट द पेंशन स्कीम रिगार्डलेस ऑफ द रिटायरमेंट पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉयर। तो एपीएफ में क्या रूल है कि 58 के बाद आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा, यू विल बी डीम्ड टू बी रिटायर्ड, भले आप अपने पेरेंट कंपनी से रिटायर न हुए हों, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज शुड वन ऑप्ट फॉर अ हायर पेंशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, that higher pension may provide a sense of economic security after retirement, but the amount that a pensioner gets during his or her lifetime will get halved on his or her death and paid to the spouse. However, the amount that is lying with an employee's PF account will be paid totally to the employee's spouse in the event of his or her death during service. The next is what are biocomputers and how do they function? तो यहाँ पे biocomputers है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ब्रेन जिस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, ठीक है, और देन वी विल यूज इट इन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि देयर विल बी एन ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस विच एम्स टू क्रिएट बायो कंप्यूटर्स। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन द लैब, दे विल बी कपल टू रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जो ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन द लैब, ओके, टू रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, then the scientists expect the technology to harness the processing power of the brain and understand the biological basis of human cognition, learning and various neurological disorders, fine। So this is the biocomputer, जहाँ पे ब्रेन को लैब में डेवलप किया जाएगा, जो ब्रेन के जो कम्युनिकेटिव पार्ट होती हैं, and then they will be feed with modern technologies to understand the biological basis of human cognition, कि ह्यूमन किसी चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे किसी चीज़ को लर्न करता है, and other neurological disorders। तो जो ये मिनी ब्रेन्स हैं, दे आर बिल्ट यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल्स एंड कैप्चर मैनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन कैसे डेवलप होता है वो सारा इसमें भी होता रहेगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू क्या है,
ब्लड सर्कुलेशन का विच लिमिट्स हाउ दे कैन ग्रो, ठीक है। भाई ब्रेन को डेवलप करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, बट यहाँ पे जो लैब में हम क्रिएट करेंगे तो उसमें तो ब्रेन का सर्कुलेशन होगा नहीं। तो साइंटिस्ट लोग ने एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया मेथड निकाला है। दे विल transplant this human brain organoid cultures into a rat brains where they formed connections with the rat brain which in turn provided circulating blood. तो उन्होंने रैट के ब्रेन को यूज किया फॉर सर्कुलेटिंग द ब्लड. Now, since the organoids had been transplanted to the visual system, when the scientists showed the experimental rats a light flash, the human neurons were activated to indicating that the human brain organoids were also functionally active. Fine. अब ये जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, इनका क्या प्रोग्राम है, that the scheme will combine brain organoids with modern computing methods to create biocomputers. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, that they will use the organoids with machines learning by growing the organoids inside flexible structures affixed with multiple electrodes, okay, similar to the ones used to take EEG readings from the brain. Then after that, the scientists, they will study the response pattern of the neurons and their effect on human behavior or biology will then be analyzed by machine learning techniques. Now coming to the brain organoids, so they can also be developed using stem cells from individuals with neurodegenerative or cognitive disorders. Then comparing the data on brain structure, connections and signaling between healthy and patient-derived organoids can reveal the biological basis of human cognition, learning and memory. So this is the project of John Hopkins University for Biocomputers. अब इसके कमर्शियल यूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रेन ऑर्गेनाइड्स हैं, दे विल हैव अ डायमीटर ऑफ लेस देन 1 mm एंड दे हैव फीवर देन 1 lakh cells, which will make it roughly 3 millionth the size of actual human brain. So scaling up the brain organoid is key to improving its computing capacity. Fine. अब यहाँ पे चैलेंज मेन क्या है, द चैलेंज इज टू एस्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, so which will be achieved in 1 or 2 years. Now coming to Raisina Dialogue and the Conference of Global Intelligence Chief. तो यहाँ पे देखेंगे कि amid the G20 foreign ministers meeting and ahead of the Raisina Dialogue, India has held the second conference of intelligence and security chiefs and top officials from around the world, which is called the Raisina Security Dialogue. So it was held on March 1st, which saw the participation of 26 countries. Fine. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे the conference, it was focusing on important issues like counter-terrorism, radicalization, drug trafficking, illegal arms smuggling. और इसको एड्रेस किसने किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, दे हैव एड्रेस्ड द कॉन्फ्रेंस. ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है, इट इज मॉडल्ड ऑन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली हुआ था February 17 to 19, ओके, एंड देन सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग. यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट यूएस वाज एब्सेंट, but intelligence chiefs from UK, France, Japan and Bahrain were among those who were present. Then the next is कि ये जो security conference है, it was organized by countries' external intelligence agency, which is RAW, Research and Analysis Wing, and National Security Council Secretariat. Now अब हम आते हैं राइसीना डायलॉग के बारे में. So what is राइसीना डायलॉग? So राइसीना डायलॉग, it is India's flagship conference on geopolitics and geostrategy organized by Ministry of External Affairs in collaboration with Observer Research Foundation. It was started in 2016 and the 8th edition was held this year. Now see, who was the you can say a chief guest at the Raisina Dialogue in 2023. So Italian Prime Minister Giorgia Meloni. So we already know that Giorgia Meloni, she belongs to Italian Brotherhood Party, which is a far right party in Italy. Now the next is Nation Secure Pact to protect marine life in high seas. For the first time, if we will see that United Nations members, they have agreed on a unified treaty to protect biodiversity in the high seas. High seas का मतलब those seas which falls beyond the exclusive economic zone. So यहाँ पे देखेंगे that treaty was concluded in New York. Fine. And if you will see that the treaty, it will create a new body to manage conservation of ocean life and establish marine protected areas in high seas, and it is critical to achieve UN Biodiversity Conference pledge to protect 30% of the planet's water as well as its land for conservation by 2030. Now coming to Hindu rate of growth. So former Reserve Bank Governor Raghuram Rajan has said that India is dangerously close to Hindu rate of growth because of declining private sector investment,
high interest rate and slowing global growth. Now what is this Hindu rate of growth? So Hindu rate of growth is a term describing low Indian economic growth rate from 1950s to 1980s, which was averaged around 4%. तो वहाँ पे भी रीजंस जो थे, इट वाज डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन डिक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट एंड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ. जो आज का प्रॉब्लम है, उस वक्त का प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से था जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट था इट वाज एवरेज एट अराउंड 4%. नाउ कमिंग फ्रॉम फॉरेन न्यूज, चाइना इंक्रीजेज डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%. अब हम जैसा कि जानते हैं कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहाँ का जो एक पार्लियामेंट है वो एक रबर स्टैम्प की तरह ऑपरेट करता है. उसको हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस और पार्लियामेंट, विच ओके. इसका एनुअल सेशन जो है वो बेजिंग में होता है. तो यहाँ पे जो आउटगोइंग प्रीमियर है ली कैंग, ही डिलीवर्ड हिज लास्ट रिपोर्ट टू एनपीसी, okay, which highlighted that which recommended that China should hike defense spending by 7.2% to $225 billion in 2023 because of complex security challenges. उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट है फॉर 2023, इट हैज बीन हाईलाइटेड एट 5%, and they are saying that economy failed to meet its 5.5% target for 2022, growing by only 3% due to zero COVID policy. Fine. The next is, now they are saying that the report says that around 12 million new urban jobs will be created this year. Okay, and then there will be boost in strategic high-tech industries while diffusing major economic and financial risk. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.